also. Yeah. A lot of people say why Bhagavad Gita was required. Bhagavad Gita as in why Mahabharata, that world war was required. So sometimes, it comes like it was too much of bloodshed. And if Lord Krishna is really a god, he could have avoided it. बहुत सारे लोग counter करते हैं. और ये question बहुत अच्छा है क्योंकि everything starts with questioning. Until you don't ask questions, you will not get answer. So people who are asking this also makes a valid sense, but the background was important to answer those kind of queries. uh, and that is why we took last two sessions. So meanwhile, I'll just do the screen share and start. Yeah. Yeah. So the first two session ka recap goes like this. What was the agenda? We were trying to look at the spiritual need, what we exactly look from our life, and what we are trying to do most of the time. We are busy in our material requirements and we are seeking happiness. This is the whole crux at human level what we are doing. हम लोग मुनीश जी, अगर आपकी मदर आपके साथ हैं तो इंग्लिश चलेगा कि मिक्स चलेगा? आई जस्ट फॉरगॉट आस्किंग. हाँ, इधर both, not a problem. I can do mix, right? Okay. हाँ, I thought I'll ask you. बाकी two people are known, so I know they're okay with English. Hindi mixed also will work. Right. So here we are talking कि पूरा human birth is more seeking for happiness. हम छोटे से बचपन से लेके end तक what we are doing is just seeking happiness in material things, in physical or emotional things. कैसे happy हो सकते हैं? There are three things which Bhagavad Gita says: physical need, emotional need, and psychological need. And we, throughout the time life, try to fulfill only those three needs. Still, some of them are unhappy who have gained the highest of the material things, and we have seen the examples, some of them even committing suicide. And people who achieve maximum in their life ultimately find happiness in giving, which is a essence of a little bit of spirituality, maybe 1% of spirituality, the joy of giving, right? That means ultimate happiness comes from the spiritual need fulfillment, because how we feed our body, how we feed our mind. आजकल बहुत ज़्यादा fact चल रहा है कि mental feed. That means you have to think positive, you have to affirm a lot of positive things and change your mindset. At the same time, physical, mental, emotional है, but what about soul? We have a soul inside, right? I mean, in this body, the body is functioning, and the spark which regulates the whole body is soul. The soul also needs its feed, or soul ka feed is spiritual needs. Some of the divine words coming from Bhaktivedanta Swami Prabhupada from ISKCON. And yeah, I mean, we understood again Dukhalaya, Masashvatam, this material world. We understood the species, what kind of species are there, and some background of Bhagavad Gita, that it was first given to Surya Dev, Vivaswan, then it is from there it has come to different descendants. So Arjun was not the first to receive this. एक ये बहुत बड़ा myth है. ये बहुत सालों से मतलब I don't know, it is said in Bhagwatam, which is 18 books. It is said that अरबों साल पहले से ये information. So this is why this is called Sanatan information. That means there is no beginning and there is no end to this knowledge. Last session we understood why this war was required and how Pandu and Kauravas were fighting, and Kauravas were doing injustice to Pandus, and there was a lot of adharma associated to this, and because of which there was this war which was inevitable. So this is little background. What all Dhritarashtra and Duryodhan has planned for against Pandavas, that was covered. The troubles Pandavas were having because of Duryodhan. So there was the Draupadi Chirhanan, which was very, very adharma and injustice because of whatever plots Shakuni and Kauravas were playing. मतलब उन लोगों ने बहुत ज्यादा चालाकी से ये पूरा ट्रैप बनाया था. फिर लाक्षागृह मैंने बताया लास्ट टाइम कि लाक्षागृह में पूरे जो है दोज वर ऑल मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स डिप्ड इन घी, कि पूरा मतलब लाख के बना हुआ था कि पूरा जल जाए. इट वाज ऑल इन्फ्लेमेबल मटेरियल इंग्रेडिएंट से बना हुआ था. वहां पे जानबूझ के पांडवों को ट्रैप किया सो दैट दे गेट किल्ड. But because of some insider information वो वहां से निकल गए, and then they were hiding because they know they have, I mean, Kauravas have come to this level to kill them. So these are all background कि कितना injustice जब अधर्म होता है, that is where God does not tolerate adharma. There is one shlok also
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब that means every yug when adharm goes out of the limit, God will come appear and he will मतलब धर्म की स्थापना करते हैं. So now because of these background the war is inevitable. क्या क्या हुआ उनके साथ, 12 साल का वनवास हुआ पांडवों को, और 1 साल का इनकॉग्निटो था. इनकॉग्निटो मतलब दे हैव टू हाइड देयर इंफॉर्मेशन एंड हाइड देयर आइडेंटिटी, कि मैं अर्जुन हूँ या मैं भीम हूँ. अगर किसी को भी उनकी आइडेंटिटी पता चली तो अगेन दे हैव टू गो बैक टू 12 years ऑफ एग्जाइल, विच वाज अ बिग पनिशमेंट. और कोई बावर्ची बना हुआ था किसी ग्रुप में, कोई रानी की दासी बनी हुई थी. आई थिंक द्रौपदी वाज प्लेइंग दैट रोल एंड हाइडिंग हर आइडेंटिटी. So that was again a punishment given. लॉर्ड कृष्णा ने फिर भी पीस मैसेज दिया कि इसको जो है, बिकॉज पांडवास आर क्षत्रियास, आपको 4 या 5 गांव दे दो, बिकॉज देर आर 5 पांडवास, तो आप 5 गांव दे दो, दे विल सर्वाइव ऑन दिस, वी वांट टू अवॉइड वॉर. लेकिन व्हाट कौरवास सेड दैट वी विल नॉट गिव एनीथिंग एज मच एज अ नीडल पिन, मतलब एक सुई की नोक बराबर भी जमीन हम देने वाले नहीं है. Of course, then Pandavas are Kshatriyas. They cannot do any other, thing for their survival. So that is where now the war is inevitable. तो अब जाके कृष्ण ने अर्जुन को फिर इनफैक्ट मोटिवेट किया दैट यू हैव टू फाइट. सो फार ही वाज ट्राइंग टू फाइंड अ पैच अप सोल्यूशन. इसीलिए जब हम अगला नया सेशन स्टार्ट करेंगे वी विल सी पैच अप सोल्यूशन और परफेक्ट सोल्यूशन. कृष्णा विल ट्राई बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ bloodshed, so he was trying a patch up solution. But despite of this, now we will see how he motivates Arjun to fight in the war. फिर हमने सीखा द पहला श्लोक है जो भगवत गीता का, विच इज धृतराष्ट्र ने जो बोला है. और पूरे 18 चैप्टर्स में और पूरे 700 श्लोकों में सिर्फ एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र बोलते हैं, जो कौरवों के फादर हैं. इन्होंने बोला, ओ संजय, एंड ही इज ब्लाइंड, राइट? सो इवन इफ ही गोज टू द battlefield he cannot see anything, so he's asking Sanjay, who is his minister, कि after my sons and Pandu have assembled in the field of Kurukshetra, क्या चल रहा है वहां पे. सो डिस्पाइट ऑफ ही नोइंग कि मेरी आर्मी बहुत अच्छी है और हमारे पास पूरी कृष्णा की अक्षायनी सेना है, ही स्टिल कंसर्न्ड. नाउ व्हाई दिस कंसर्न एंड फियर इज कमिंग, वेयर इज दिस कमिंग? दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनजस्टिस, दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ अधर्म. तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि हम जब भी कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, हमें अंदर से पता होता है, एंड देयर इज समथिंग विच इज दैट सोल गाइडिंग अस, आवर कॉन्शियसनेस गाइडिंग अस. और वो एक छोटी सी जो आवाज आती है दैट दिस इज रॉन्ग, एंड देन वी पुट मेनी रीजनिंग के, अरे यार उसने भी तो किया था, अरे ऐसे हुआ था और मैं तो ऐसे ही करूंगा, या मैं तो यही होने वाला है, दिस इज राइट, इट्स ओके. तो ये जो रीजनिंग होती है ना, ये माइंड मैटर करता है. बट जो सोल की जो फर्स्ट वॉइस आती है कि दिस इज रॉन्ग, इज द गाइडेंस वॉइस ऑफ आवर्स. So Dhritarashtra realized that, and that's why he's worried and he's asking Sanjay. अर्जुन पूरे डिलेमा में है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्लडशेड होने वाला है और मेरे सारे रिलेटिव्स है सामने. अर्जुन जो इतना बड़ा धनुर्धारी योद्धा है, ही इज कंफ्यूज्ड. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट आई मीन, हाउ वी कैन रिलेट दिस टू अस कि हमारे पास भी सब कुछ होता है, then also we have problem. We have good bank balance, we have good house, we have good relatives, फिर भी we are not happy. So this is called the confusion of material world. इस धरती पे जो हम हैं, this is always governed by mind control, कि हमें अपने mind को ही control करना होगा. Only then we will find happiness. एंड एज वी मूव फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कि दुर्योधन ने जिस तरह से प्लॉटिंग करी थी, उस प्लॉटिंग में क्या सक्सेस गारंटीड है या नहीं. मतलब दुर्योधन ने हर तरह से वॉर जीतने की कोशिश करी, जिसको बोलते हैं साम दाम दंड भेद, गलत सही, पावर, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग ही ट्राइड. उसने क्या किया, सही लोगों को आइडेंटिफाई किया, सही लोगों को सही पोजीशन पे बिठाया, लोगों को इमोशनली और मैनिपुलेट किया. जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि द्रोणाचार्य को उन्होंने मैनिपुलेट किया कि आपने ये सब सिखाया है, सारा युद्ध कौशल, दैट मीन्स द बैटलफील्ड इंटेलिजेंस यू हैव टॉट टू द ऑपोजिट पार्टी, एंड नाउ धृष्टद्युम्न इज द मिनिस्टर ऑफ पांडवास, and they are governing the battlefield so well, so now don't do any more mistake. उन्होंने पूरा एनालिसिस किया दुर्योधन ने, पेन्स एंड गेन. सो अनदर एग्जांपल इज जब कृष्णा ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को पूछा कि व्हाट डू यू वांट, वन साइड इज मी, अनदर साइड इज माय अक्षौहिणी सेना, व्हिच इज माय आर्मी.
तो दुर्योधन मेड द वेरी गुड एनालिसिस, एंड ऑफ कोर्स अर्जुन फर्स्ट चोज कि मुझे कृष्णा चाहिए, बट दुर्योधन वाज ऑलवेज वांटिंग दैट आर्मी ऑफ कृष्णा, so he made all the calculation of pains and gains, and he got that army of Krishna. Even then he is worried. So he made a solid plan. और उसके बाद में ये फिर से एक श्लोक है जो दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य को, जो हमने लास्ट सेशन में डिटेल में कवर किया। भीष्म और पांडवास की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन फिर भी दुर्योधन फेल हो गया। सो दैट मीन्स भगवत गीता, I mean, I changed the group subject also yesterday because, now I want to govern this more towards Kurukshetra to cooperate. That, not only reading Bhagavad Gita or learning Bhagavad Gita, but how this knowledge of Bhagavad Gita, just one. Yeah. How this knowledge of Bhagavad Gita is going to help us in our everyday life. हमें कैसे ये हमारी डे टू डे लाइफ में मदद करने वाली है. So this is important. That is why I made it like the group name as Bhagavad Gita to cooperate. So this is what we covered in last session. और आज हम क्या देखने वाले हैं? Let me again share another screen. Yeah, the second presentation is visible. Screen share हो गया? Screen is shared, but presentation is not opened yet, or its अच्छा, screen is freezed. I will share again. I'll do stop share and share it. Any better? Yes, visible now. Great. Okay, so today what we are going to understand, before we start the further knowledge, let me do a small prayer where we are asking our spiritual masters who are opening our eyes for this highest wisdom. So, Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. So, I pray to all gurus to give us this wisdom and bless all the humankind with more of this Bhagavad Gita wisdom. Yeah, as we move forward, we will understand we have covered war is inevitable. Now, how the expertise and organization cause of success and the actual cause of success. मतलब success की सही चीज और सही ingredient क्या है? Expertise and organization the cause of success, steps to success ये repeat हो रहा है. हाँ, now let's come to the ultimate learning of today's session. Causes of suffering. हमने लास्ट जो फर्स्ट सेशन था उसमें भी थोड़ा सा कवर किया था कि सफरिंग इस ह्यूमन लाइफ में होती क्यों है. आई मीन इफ यू एनालाइज, अगर आप लोग कभी भी पेन पेपर लेके बैठो या इवन नाउ इफ यू वांट टू एनालाइज, फिगर आउट व्हाई दिस सफरिंग, वी विल सी कि इस महीने टैक्स कट गया. इज दैट अ रियल सफरिंग? वो तो हमें पहले से ही पता था कटने वाला है, एंड वी नो दैट दैट्स अ गवर्नमेंट लॉ कि अरे बड़ी सारी सैलरी टैक्स में चली गई. दैट इज ऑल्सो सफरिंग, बट वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? या कोई एक ऐसी हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करी जिसकी रिटर्न्स उतनी एक्यूरेट जो हमें चाहिए थी वो नहीं आई. वो तो पहले से हमें पता था कि चांसेस आर 50-50, बट अगेन व्हाई आर वी सैड, व्हाई आर वी सफरिंग फॉर दैट? सो सफरिंग इज कमिंग फ्रॉम अटैचमेंट टू परमानेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू भगवत गीता. Now, this is what we'll take more in detail today, but there are other things also where suffering is coming from. The second thing is attitude of comparison. When we compare ourselves with others, when we compare our kids with others, when we compare our family dynamics with others, our earnings with others, our house, our car, everything, even maids, बाइयां भी कंपेयर होती हैं आजकल, उसकी अच्छी है मेरी बेकार है, मेरी अच्छी है उसकी बेकार है. So all of this comes from attitude of comparison. एक बहुत बड़ी suffering का reason है. तीसरा suffering का reason है fear of failure. According to भगवत गीता, डर इंसान के जीवन को पूरा रेगुलेट करता है. हमारे उतने फेलियर्स हमारी लाइफ में नहीं होते जितना हमारा दिमाग बना देता है. इफ यू असेस योर डे,
In a day, we have around 70,000 thoughts. It's proven scientifically. Nowadays, scientists are doing पूरा chip विप लगा के पूरा brain का surgery कर रहे हैं in terms of understanding के how brain functions. And out of those 70,000 thoughts, 90% are repetitive. मतलब वो जो हमने कल परसों नरसों सोचा था या एक हफ्ते से हम सोच रहे हैं वो सेम चीज आ रही है. So that means imagine when we are blowing out of proportion of the fear, वो fear जो छोटा सा चींटी है is becoming an elephant and sitting in our brain. So the suffering comes from fear of failure. अब आप ये देखो and committing wrong acts. Now one of the very important and very beautiful observation in Bhagwat Gita is, I mean, anybody is realizing here that all the four sufferings are coming from inside. सब कुछ अंदर से है, इधर से है, दिल से है, माइंड से है, हमारे इमोशन से है. अगर हम अटैचमेंट छोड़ दें तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. बट अगर आप सिर्फ अवेयरनेस लेके आए अपने अंदर कि अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ माई सफरिंग, ओनली अवेयरनेस, knowing the fact that this is one according to Bhagavad Gita, nobody is saying, Krishna is saying. सेकेंड, एटीट्यूड ऑफ कंपैरिजन. सिर्फ ये अवेयरनेस के कंपैरिजन से मुझे प्रॉब्लम होती है और डर या फेलियर मेरी लाइफ में इतना नहीं है जितना मैं उसको अपने दिमाग में बना लेता हूँ. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिटिंग रॉन्ग एक्ट्स. बेधड़क लोग गलत काम किए जा रहे हैं. दे डोंट इवन रियलाइज दैट सफरिंग कम्स फ्रॉम दिस. आपको, हमने बहुत बारी देखा है कि इस लाइफ में जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं, बट दे आर अर्निंग वेल, दे आर वेरी हैप्पी, देयर फैमिलीज आर गुड. So we think कि गलत करने से कुछ नहीं होता. We can also do it. I mean, we see a lot of examples, but these are karmic reactions. And Bhagavad Gita proves that every reaction which you make on this earth, you have to face the repercussions of it. You have to take it back. मतलब जो भी है ना वो बाउंस होता रहता है. Every karmic reaction bounces back. So somebody has done good, they will obviously bear the fruit of that goodness. Now all of us lives in three modes. We know, right? I'm sure we have heard about somewhere sometime. तीन मोड्स होते हैं. मोड ऑफ गुडनेस जिसको सतोगुण बोलते हैं, मोड ऑफ पैशन जिसको रजोगुण बोलते हैं, और मोड ऑफ इग्नोरेंस जिसको तमोगुण बोलते हैं. सबसे हायर लेवल पे सतोगुण है. दैट मीन्स यू फॉलो एंड योर, you know, the first thing in Satoguna is consciousness and awareness. It starts with this. You know what you're doing and you know what is wrong and right. सेकेंड इज मूड ऑफ पैशन, जहाँ पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, पैसे कमाने हैं, बस मुझे सबसे अच्छा करना है. दीज पीपल आर स्टिल बेटर देन तमोगुण. तमोगुण इज लाइक नॉनवेज खाओ जी, सो जाओ जितना ही मर्जी. People drink and booze to numb their emotions. Now, you know, when somebody take too much of alcohol, what is that? You're numbing your emotion. You're not able to handle your emotion. That's why you have to drink. People who are internally, अंदर से खुश होते हैं जो, उनको जरूरत नहीं पड़ती. They don't find any need for these kind of, boozing. So tamogun में जो होता है, that, I mean, those people are more prone to do wrong acts. I'm not saying satoguni नहीं करेगा या रजोगुणी नहीं करेगा, but satoguni is at least aware. So committing wrong acts is also the cause of our suffering. Now, what in today's session we'll most likely cover is attachment, because ये ना सबसे बड़ी जड़ जिसको root cause बोलते हैं, that is attachment. So while I'm talking and taking into the new aspect जहाँ पे हम attachment discuss करने वाले हैं, और बहुत interesting है ये, कुछ अच्छे से examples आएंगे. किसी का कुछ question है, you are all free to ask or put it in the chat box. Or any feedback, am I going slow, language का problem, yeah, am I fast, or everything is okay? I believe things are good and I believe people are there. It's Sunday morning है, तो okay, there's something in the chat. Everything is okay. Thanks for confirming. Yeah, so causes of suffering is attachment. Now let's look at a very typical example. Paisa. सबसे बड़ा attachment is money, right? Now there are two scenarios. In one scenario, a friend of ours is going somewhere, और assume करोगे हम उस युग में रहते हैं जहाँ पे बैंक नहीं है, जहाँ पे जीपे नहीं है, जहाँ पे you don't have anybody where, any place where you can keep your money and go. So that friend is going somewhere for 1 month for some तीर्थ यात्रा, and he has given you one packet of money कि मेरा ये पैसा है तकरीबन 1 लाख रुपया, ये तुम संभाल के रखो, आई एम गोइंग फॉर 1 मंथ, मैं वापस आके तुमसे ले लूंगा. ठीक है, अब वो पैसा हमारे पास 1 महीने तक पड़ा है, 1 लाख रुपया.
हमारे को उससे अटैचमेंट नहीं होगी। जब वो बंदा वापस आएगा 1 महीने बाद, वो पैसे मांगेगा, विल गिव हिम। ऐसे ही होता है ना, हम आराम से दे देंगे, हमें ये दुख नहीं होएगा कि 1 लाख रुपए चले गए। जबकि अगर यही पैसा हमें लॉटरी में मिल जाए, लेट्स से हमने 1 लाख की लॉटरी जीत ली, वो लॉटरी में मिल जाए और फिर हमारा कहीं पे नुकसान हो जाए, या वो पैसा कहीं हमारा लॉस हो जाए, या कुछ मेडिकल एलिमेंट आ जाए, कुछ हो जाए, हाउ मच वी विल बी bewildered बाय द थॉट कि यार 1 लाख का नुकसान, एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन तो टेंशन हो जाएगी। So all of this, that 1 lakh was also with us. This 1 lakh is also with us. This has also come आराम से. That has also come आराम से. लेकिन जब ये दोनों पैसे गए तो डायनामिक्स कितने अलग हैं। एक हमने खुशी खुशी जाने दिया और एक हमारी हालत खराब हो गई। रीजन, बीच में क्या हुआ, अटैचमेंट हो गई कि ये मेरा है। जबकि मनी इन भगवत गीता इज कंसिडर्ड एज चंचला एनर्जी, इट्स कॉल्ड मटीरियल एनर्जी ऑफ गॉड। आप इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मनी फैक्ट। मुझे लगता है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने 2 साल पहले कोर्स करना शुरू किया था भगवत गीता का। मुझे लगता था पैसा जो होता है ना, नोट, उसको पकड़ के रख लो, इट्स अ कमोडिटी। बट मनी इज नॉट अ कमोडिटी, इट्स अ एनर्जी, इट फ्लोज फ्रीली एंड इट विल फ्लो फ्रीली। जो लोग होल्ड करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, उनका पैसा भी बाहर जाता है, बट उनका अनविशफुल तरीके से जाता है। मतलब दे डोंट वांट इट टू गो, बट इट विल गो। यू कैन नॉट, एनर्जी को कभी आप प्रिजर्व, मतलब एज इन होल्ड करके नहीं रख सकते ना हम। इट हैज टू freely flow. It cannot be created nor destroyed, right? So that is the beautiful fact about one example of attachment. अब देखते हैं कि अर्जुन को कहाँ अटैचमेंट था। अर्जुन भगवत गीता में सेइंग दैट हाउ कैन आई पनिश माय ओन फैमिलीज एंड माय फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। ही इज अटैच्ड, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट धनुर्धर एंड वेरी वेरी योग्य क्षत्रिय, आई वुड से। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अर्जुन के भी जहाँ पे उसने प्रूव किया है कि आई एम द मोस्ट कॉम्पिटेंट वन, एंड दैट इज वाई कृष्ण ऑल्सो सपोर्टेड हिम। तो ही इज कंफ्यूज्ड कि मैं मेरी फैमिली को ही कैसे पनिश करूं, हाउ कैन आई फाइट अगेंस्ट देम। कृष्णा ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, दैट द वे टू डील विद दिस इज अटैचमेंट। नाउ this is the first and the core learning of Bhagavad Gita. That's why we are emphasizing today whole session on this. Understanding what is temporary and acting on the platform of permanent. अगर आप हमें आज के दिन में कोई एक टेक अवे लेना है इस सेशन से, it can be understanding the temporary things and what is permanent. This brings us to the interesting subject of body and soul, the first lesson of Lord Krishna. Now we'll find it more interesting. Body और soul, एक temporary है, एक permanent है. Very beautiful, right? Before we get into the body and soul part, let's understand attachment गलत है क्या? या बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अटैचमेंट के बिना तो मैं काम ही नहीं कर सकता। अगर मैं मेरी सैलरी से अटैच नहीं हुआ जो 1 तारीख को आने वाली है, तो मैं कैसे काम करूंगा पूरे महीने। नाउ व्हाट कृष्णा सेज इज अटैचमेंट टू टेम्पररी थिंग कॉजेस सफरिंग एंड वी शुड नॉट अटैच विद द रिजल्ट ऑफ इट। काम तो करना है। उन्होंने अर्जुन को भी बोला था कि यू हैव टू फाइट द बैटल बिकॉज यू आर क्षत्रिय एंड यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट अधर्म। अब 4 अलग अलग वर्ण होते हैं, एक क्षत्रिय होता है, एक शूद्र होता है, ब्राह्मण होता है, राइट? एंड वन मोर इज देयर जिसको बिजनेस क्लास बोलते हैं। आई एम फॉरगेटिंग द हिंदी नेम ऑफ इट, बट देयर आर 4 वर्णास जिसमें द सोसाइटी इज एक्चुअली डिवाइडेड पहले के जमाने में। So Arjun is Kshatriya who has to stand for injustice. This is your dharma, you have to fight. So ideally, Krishna always says, do That's you Vaishnav. Vaishnav? That is right. Thanks for confirming. So Arjun always says that, I mean, Krishna says that you have to do your job diligently, but don't attach to the result. क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है और आपके नॉन अनफेवरेबल भी हो सकता है। सो द सफरिंग कम्स व्हेन वी अटैच टू द रिजल्ट ऑफ एनी आउटकम। और रिजल्ट मोस्टली गवर्न होते हैं हमारे पुराने डेस्टाइंड डेस्टाइंड फेट से, और वो डेस्टाइंड फेट मोस्टली आता है हमारे कार्मिक रिएक्शन से एंड अनफिनिश्ड बिजनेस से। अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब अगर पास्ट लाइफ में कुछ अधूरा रह गया तो इट गेट्स गवर्न्ड फ्रॉम देयर। सो यू चूज द बर्थ अकॉर्डिंगली, यू चूज योर पेरेंट्स एंड
another interesting topic जो मेरे दिमाग में आ रहा है, and I always want to share whatever I have learned, कि we keep complaining a lot कि ऐसी family मिल गई, ऐसे I mean all of this happens, right? We comparison, this also comes from comparison कि why am I born here, why this city, why this poor family, or whatever, you know. But what I have learned, and this is very beautiful, that any circumstance which is happening in your life, your soul has chosen this. Nothing is forced. It is coming from the karmic reactions and karmic vicinity, or it is a decision of your soul. Now, why our soul chooses the sufferings? That is question which every one of us can ask. कि यार हम जानबूझ के क्यों हमारे लिए problem select करेंगे? This is basically to learn our lessons of life. लेसन्स जो हमारी सोल को सीखनी है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे मेंटर ने और मेरे कोच ने मुझे बताई कि जितनी ज्यादा सफरिंग्स आपकी करंट लाइफ में है, दैट मीन्स यू आर कटिंग ऑफ योर कर्मास वेरी फास्ट एंड यू आर गोइंग ऑन द रोल एंड यू आर गोइंग ऑन द पाथ ऑफ डिविनिटी ऑन अ फास्टर पेस. जैसे वो प्लेबैक स्पीड 1.5x हो जाती है ना जब हम कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, आपकी स्पीड 1.5x की जगह 2x हो चुकी होती है इफ यू हैव टू मच ऑफ सफरिंग इन योर करंट लाइफ. So one is we have to take that suffering, that where this is coming from, and second हमें ये देखना है कि हम आज की अपनी लाइफ में on a day to day basis कोई ऐसा काम ना करें जिससे हम और कार्मिक रिएक्शंस बनाएं, बिकॉज उसका उसका रिएक्शन आने ही वाला है. दिस इज भगवत गीता इज सेइंग दिस, राइट? Now let's look into some shlokas, because मुझे लगता है 3 सेशन हो गए हमने कुछ श्लोक नहीं किए भगवत गीता के. नेक्स्ट सेशन में वी आर एग्जैक्टली स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्लास, जो श्लोक एक्चुअली भगवत गीता के शुरू होते हैं. So I will get on more and more people, because abhi, as I said, I'm not going full stream into this, but as we move forward we will have more audience, hopefully. एक्चुअली ना, बिफोर आई मीन वाइल दिस टॉपिक इज गेटिंग डिस्कस्ड, मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन फिर मुझे भगवत गीता में भगवान कृष्ण का एक वर्स याद आता है जिसमें वो बोलते हैं कि लाखों में से कोई एक होगा जो मुझे जानने की कोशिश करेगा, और जब वो सारे इकट्ठे होंगे फिर उन हजारों में से कोई एक होगा, नहीं, लाखों में से एक होगा जो मुझे जानने के लिए सोच उत्पन्न, मतलब सोचेगा कि मुझे ये चीज जाननी है. फिर उन हजारों में से कोई एक होगा जो प्रयत्न करेगा, दैट मीन्स ही विल ट्राई. और उन हजारों में से केवल एक होगा जो मुझ तक आने के लिए मुझ तक पहुंचेगा या मुझे जानेगा. So you see that how beautiful this is, and Bhagwan Lord Krishna himself has said 5,000 years back that not everybody will be attracted to this knowledge, this wisdom of Bhagavad Gita. So that's why when I send messages to like 100 people and I see कि एक आता लोग confirm कर रहे हैं, I relate to this completely. Again, this lies on my side when I say कि effort डालने हैं, result से attach नहीं होना. So I am again, convincing myself कि result से attach नहीं होना. Whoever is coming, I want to give them my best, and I hope that is what is my best which I can do in terms of my karma. So yeah, uh, देहनो अगला श्लोक है. दिस इज कमिंग फ्रॉम चैप्टर, यहाँ पे लिखा है ना 2.13, सेकेंड चैप्टर का, बट बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है. देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति. वेरी वेरी ब्यूटीफुल श्लोक. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देहनो अस्मिन यथा देहे, मतलब जो हमारी देह है वो जो अलग अलग फेजेस में जाती है. जब हम बच्चे होते हैं, कौमार अवस्था, फिर यौवन अवस्था, और फिर जरा मतलब बुढ़ापा, जहाँ पे डिजीजेस लगते हैं हमको. तथा देहांतरम प्राप्तिर, मतलब उसके बाद में फिर से, मृत्यु होने के बाद फिर से देह मिलती है. अब वो देह इंसान की मिलेगी, जानवर की मिलेगी, वो पता नहीं. प्राप्तिर धीरस्त्र न मुह्यति. अब इस प्रोसेस को देखकर जो इंसान बिविल्डर्ड नहीं होता है वो धीर पुरुष है. लेट्स अंडरस्टैंड इन इंग्लिश. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such change. आप एक बार ये श्लोक पढ़ो, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट.
Yeah. So, मतलब what he's trying to say, this is one of the beautiful message of Bhagavad Gita कि आप देखो, we are changing every year, every 2-3 years our body changes. Like when we look at our photo जब हम छोटे थे, so from there where we have come and we have seen our elders, our ancestors are no more with us. तो जो इंसान ये सारे चेंजेस को लेके bewildered नहीं होता है and accept it as a reality, because सनातन टाइम से ये चला आ रहा है that people will take birth and death is also eternal. I mean, it is unavoidable. That person is sober according to Bhagavad Gita. Now let's understand. We were talking about, I know थोड़ा सा ये break हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन it is important. हमने एक बार एक स्लाइड पे डिस्कस किया था बॉडी एंड सोल वाला चीज, which is one permanent and one non-permanent. So when we were talking about attachment there, the same thing is followed here कि एक चीज परमानेंट है और एक चीज नॉन परमानेंट है. देही एंड देह, ये देखिए आप दो चीजें हैं, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी. नाउ व्हाट कृष्णा इज सेइंग, व्हाट इज सटल बॉडी? Subtle body is mind, intelligence, and ego. I think I've touched base this once before also. And gross body, मतलब जो physically दिखती है, वो है earth, water, fire, air, and ether. ये श्लोक में भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा से. So this was a little background of that श्लोक. He says, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा. मतलब I have 8 components of my प्रकृति, material energy. क्या क्या components है वो? अर्थ, वाटर, फायर, देखिए ना, भूमिर आपो अनो अनलो वायु, ये है 5 के 5. अब यहाँ पे मनो बुद्धिर एव च, खम मनो बुद्धिर एव च, दिस इज सटल बॉडी. So earth, water, fire, air, ether is gross body and mind, intelligence and fire, false ego. हिंदी में बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार. This is subtle body. Now together these 8 constitutives are my material energies. मतलब इस प्रकृति में ये जितनी भी चीजें हैं ये भगवान की मटेरियल एनर्जी है. इसको हम परा और अपरा प्रकृति भी बोलते हैं. एक है जो स्पिरिचुअल है, परा प्रकृति, और एक है जो मटेरियल है, अपरा प्रकृति. So there are two types of energies of God: material energy and spiritual energy. We have understood that material energy has these 8 elements according to Bhagavad Gita, and this is which shlok, which chapter? 7th chapter, 4th shlok. Now again, very interesting part. Now he is telling Arjun that besides these, O mighty armed Arjun, there is another superior energy of mine. Material के अलावा एक superior energy है which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Beautiful, amazing knowledge. मतलब ये जितनी भी हमारी मटेरियल एनर्जी का जो 8 इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स बताएं, कृष्णा इज सेइंग कि उसके ऊपर मेरी सुपीरियर एनर्जी है जो कि लिविंग एंटिटीज है. दैट मींस इज रेफरिंग टू सोल्स, जो क्या करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में आके मटेरियल एनर्जी जो इंफीरियर एनर्जी है या रिसोर्सेज है, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं. सो दैट ही नोज वेरी वेल दैट वी आर एक्सप्लॉइटिंग. सारी रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं हमारे सस्टेनेंस के लिए, हमारी लिविंग के लिए, एंड ही नोज दैट वी आर द हायर सेल्फ, राइट? नाउ हाउ मच टाइम इज देयर? आई थिंक सेशन भी एंड होने वाला है, और अगर सेशन एंड हो जाए तो प्लीज रीजॉइन. रिमेनिंग मीटिंग टाइम इज शोइंग 4 minutes. आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन 4 minutes, फिर हम अगले सेशन के लिए रख देंगे, बिकॉज अभी बहुत इंटरेस्टिंग वर्सेस आने वाले हैं. And I'm fully enthusiastic and passionate to start. I mean, coming session से और भी interesting होगा. So yes, what is this picture showing us? Sometimes it's hard to open your hands, but need to. आप देखो इंसान की हालत कैसी है, मतलब गिरने वाला है. There's a threat to his life. लेकिन what this picture depicts, this is the ego. जिसमें हम बोलते हैं ना मन बुद्धि अहंकार, subtle body. This is the ego which is holding him and not letting him take the help and rise to the higher consciousness. So just take away this with you. In today's session, the two takeaways can be attachment
to temporary things, observe how we are getting attached. Just the awareness will help us. And second takeaway can be that how our ego is always pulling us down. ये आप डे टू डे लाइफ में भी देखो, ईगो है तो हम बात नहीं करेंगे रिलेटिव से, जी मैं क्यों जाऊं पहले, वो नहीं बात कर सकता क्या? या ईगो है तो वी विल यू नो लॉट ऑफ वेज इट इज अफेक्टिंग, वी विल नॉट अप्रोच ए इंटरव्यूअर, या हमें लगता है कि वी आर द बेस्ट, वी स्टॉप वर्किंग ऑन आवरसेल्फ. सो on our day to day life also, ego is causing a lot of damage and a lot of pulling down to us. Now again another shlok, what Bhagavad Gita chapter 2 and 18th shlok is saying, the oh sorry, कहाँ गया? हाँ, the material body of indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. Now what Krishna is saying कि मटेरियल बॉडी तो इंडेस्ट्रक्टिबल है, इमेजरेबल है, वो तो वैसे भी मरने वाले हैं, सारे के सारे मरने वाले हैं. इट्स नॉट दैट यू आर किलिंग, दे आर नॉट इटर्नल, दे आर गोइंग टू डाई. बट लॉर्ड कृष्णा इज मोटिवेटिंग हिम टू फाइट. O descendant of Bharat. Matlab, he is telling Arjun to fight. That means how he is motivating every one of us through this Bhagavad Gita to do our niyat karma. Niyat karma means what is our varna, and according to that, what is our niyat karma, what we have chosen, what our soul has chosen, to do that niyat karma on a very diligent manner. Another interesting verse is Vansasi Jirnani Yatha Vihai Navani Grahani Naro Aparani तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति navani dehi. That means as a person puts on new garments and gives us old clothes, the soul similarly accepts new material bodies. अच्छा, मीटिंग 1 मिनट में एंड होने वाला है, so if in case we could not conclude, आप लोग प्लीज 5 मिनट के लिए वापस आइएगा, and then we'll close this before 8:50. I'll try 8:45, but 8:50 के पहले definitely. So yeah, यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे इंसान का शरीर नए नए कपड़े पहनता है, रोज कपड़े पहनता है और पुराने कपड़े या फटे हुए कपड़े हटा देता है, सिमिलरली सोल मटेरियल बॉडीज धारण करती है या पहनती है, और जो पुरानी या फटी है, जो काम की नहीं रहती, उसको हटा देती है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. बच्चा होता है, उसको एक नया जीवन मिलता है, उसको बोलते हैं नव जीवन, राइट? we grow and we kind of flourish and we achieve a lot of things. जैसे ही एक बूढ़ा इंसान होता है, उसका बॉडी उसका सपोर्ट नहीं कर रही होती, it becomes so difficult to stay in this body, and then soul decides to leave that body because now that body is of no use for that soul to do the day to day activities, to make any learnings of life. अगर spiritual growth करनी है तो वो body bed ridden है, वो spiritual growth में भी help नहीं कर रही. So the soul decides the right time to leave the body. Beautiful shlok by in Bhagavad Gita chapter 2 and 22 shlok, ki every time we change clothes,